Now we'll be starting some facial yoga. Your face should be clean or make sure that your hands are clean. Okay? बाहर से आके कहीं भी धूल मिट्टी से आके फेस पे ऐसे टच नहीं करेंगे हम. Touching the face with your hands makes your skin more prone to pimples and acne. Okay? This is the medical science. दूसरा, what is the energy science behind this? तो हमारा हाथ और पैर एनर्जीज को ट्रैप कर लेते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को. तो टचिंग दिस विथ डर्टी हैंड्स ओवर आवर बॉडी, वो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है. तो इसीलिए हम कभी भी योगा और एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, हम हमेशा हाथ और पैर एटलीस्ट क्लीन करके बैठेंगे. कमर पीठ एकदम सीधी. ऑल ऑफ योर बैक, हेड एंड नेक should be straight. With inhalation, you will be lifting only your neck. Your back should be straight. Back straight. With inhalation, just lift, inhale, lift your head up and look into a ceiling, or you can keep your eyes closed as you wish. You have to hold the breath for 10 counts. Like this. Then with exhalation only, you have to come to center. Your face should be perpendicular to your spine. Got it? My point. Face should not be like this, like this, like this. Okay. Otherwise, you can get neck cramps. Next, we will be doing inhale, come down, lock your chin. Now there is the catch. Where have to lock your chin? कहाँ पे chin लगाना है? देखेंगे. अच्छे से देखेंगे. ये हम सबका कॉलर बोन होता है. कॉलर बोन के पास एक गड्ढा होता है. ओके, देयर इज अ डिप इन बिटवीन योर टू बोन्स. योर चिन शुड बी प्लेस्ड एट द डिप ओनली. इफ यू विल प्लेस योर चिन बिहाइंड द डिप और अबव द डिप, you will be getting hunched back or you will be doing mostly neck. Okay, you should not be doing this. Your neck should be straight and just bending, not like this. गोल नहीं बना लेने का है नेक को. नेक और पीठ सीधा होना चाहिए. तो कैसे समझेंगे? ये जब ये कॉलर बोन, ये लेंथ ऐसा ही दिया है भगवान ने जितना आपका नेक बेंड होके आना चाहिए. तो आप अपना ठुड्डी, दिस चिन should touch the deep of your neck and your back should be straight. Then you can understand you are doing the right posture. With inhalation, we'll come down, lock your neck, hold 10 seconds. I'm sitting on mat, keeping your hands. Inhale, guys. Inhale, slowly look up, look up, look up. Neck, everything straight, look up. Look to the ceiling. Hold your breath. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Release slowly with exhalation. Come down, come down, come down to center. Slowly. We'll be doing as slow as you can. Okay? कोई अपने नेक को फोर्स नहीं करेगा. पट पट नहीं करना है. ऐसे चले जाए, ऐसे आ जाए नहीं. कंधा दुख जाएगा. Again, we'll be doing 3 times. Next step is locking the chin with your collarbone. Same process, inhalation करके लॉक कर देना है. फिर होल्ड करना है, काउंट करेंगे. Okay? चलो, we'll be doing together. Inhale as much as you can. Fill your lungs. Fill your whole area, chest area. And slowly go down. Lock here. Lock here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Slowly exhale करते करते slowly come up. Look straight. Just relax कर लो. अभी हमने देखा ऊपर नीचे, अभी इसी का थोड़ा लेवल अप. The next exercise that I'm showing, this is very good for all your thyroid problems. This is good for face, so obviously. Face ka glow, all wrinkles, fine lines. You might be noticing people around their 40s tend to have this sagging skin, droopy lips around this region. Might be, you might notice someone.
नॉट एवरीवन। तो ये एक्सरसाइज उनके लिए बहुत ही अच्छा है। कैसे करेंगे? नेक रिलेटेड सर्वाइकल प्रॉब्लम सबके लिए बहुत अच्छा है। देखो, इनहेल विथ इनहेलेशन, ऊपर देखेंगे। अभी इसमें अब नॉर्मल ब्रीदिंग करते करते आपको करना है पाउट। सबको पाउट करना आता है, ऐसे, है ना, लिप्स को लेके जस्ट लिप्स को थोड़ा ऐसे एक पॉइंटेड शेप में आगे करना। तो ये पाउट आप जैसे सेल्फी के लिए करते हो, ये पाउट आपको ऊपर देखते देखते करना है। तो आपको you will feel a stretch around your jawline, your jaws will be tightened, your face will be sleek like models, like this chin will be sleek, all your neck muscles will be getting toned. क्यों करते हैं हम ये? Listen, there is a rule of muscle. जो मसल काम नहीं करता वो अपनी इलास्टिसिटी, अपना फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है। दिस मसल रूल इज फॉर एवरी मसल इन योर बॉडी। काम करवाओ वरना भूल जाओ। तो व्हाट डज इट मीन? द मसल हैज टू डू वर्कआउट एवरी डे टू मेंटेन इट्स इलास्टिसिटी एंड लास्चर। सो दिस रूल्स इज फॉर योर फेस मसल ऑल्सो। जैसे बॉडी बनाने के लिए वर्कआउट करना पड़ता है तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनते हैं, सेम फेस मसल्स को टोन रखने के लिए हमको फेशियल एक्सरसाइज डेली करना मैंडेटरी है। तो ये एक्सरसाइज आपके ये अपर चिक्स को छोड़ के बाकी लोअर ये जगह पूरे को टोन करता है। तो हम कैसे करेंगे? स्टार्ट इनहेल करते करते ऊपर, लुक अप एंड पाउट फॉर 10 times, 20 times, 30 times as per your capacity, or 5 times, whatever you feel like. मन में काउंट कर सकते हो। एटलीस्ट 30 टाइम्स तो करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 30 टाइम्स। You can do as much as you can, but don't exceed 30 times for the first day. Otherwise, you might get little aches in jaw. सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, फिर से नॉर्मल आ जाएंगे, सांस ले लेंगे, फिर से करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है कि एक ही बार में 30 करना है। पहले उठाया, इनहेल किया, 10 किया, नहीं हो रहा है, कंधा दुख रहा है, कम डाउन, रिलैक्स कर लो, फिर करो। ओके। Next exercise is Kapol Shakti Vikasaka. This is very good for all your fine lines, wrinkles, pimples, and the glow for your skin. How to do this? In this yoga, this is Kapol Shakti Vikasaka, means increasing your facial tone. This Sanskrit word means we will be using this 5-element theory. Okay. First, with inhalation, we will fill our lungs with oxygen and blow our mouth, inflate our mouth like a balloon. सांस ले लिया, सांस नहीं छोड़ेंगे, होल्ड करेंगे। नेक्स्ट, इस भरे हुए सांस के साथ चिन को ऐसे इधर लगाएंगे जैसे पार्ट 2 में किया था हमने। समझ आया? फिर उसके साथ एक एडिशन है। आफ्टर इनहेलिंग, blowing your mouth, you have to plug your nose like this, and we have to join all the hands, and then we have to tuck our chin to our chest. Okay, what are the steps? Inhale like a balloon, make your mouth like a balloon, put lock on your nose and balance all the 5 elements, fingers like this, and then tuck your face with your neck, the region that I've shown you earlier, and holding for 10 counts. With practice, we'll be go up to 20 count, 30 count also. Okay, this will increase the blood circulation in your face, neck region, and your skin will become like plastic. Inhale, tuck in, bend your neck, back एकदम straight, tuck in your, hold, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and release. Slowly go up. छोड़ेंगे धीरे धीरे। देखो, अभी छोड़ते टाइम whenever feel like that hunger, breath hunger ना,
First, release the posture. Don't release your breath. Breath should be released after removing your hands, neck in straight position, then release through nose only, not through mouth. This is the mistake that people do, releasing the breath through mouth in this kriya, and then they don't find results, and also they find difficulty in breathing later on. Okay, how to release it? First, inhale. Pat your neck, your chin, your lips, your ears, and your chest region. Okay, you can pat your neck also, neck, head, like this. Okay, just pat 1 minute. Okay, do this for your own self. Okay, then you will forget parlor and facial and other things. Close your eyes, everyone. Relax your breath with inhalation. Slowly exhale all the negativity, all the tension, stress. Thank you, universe. Thank you, God. Thank you, all the great divine beings, for helping us in this beautiful divine session, for letting us know the knowledge of face yoga. Thank you, thank you, thank you. I am very beautiful. I am a beautiful soul. I am a blessed child of God. I love my body. Everybody loves me, and I love everyone. Thank you, my body. Thank you, every cell. Thank you, all my cells and tissues, for taking care of me, all my organs for working fine. Thank you, thank you, thank you. With this, bow with chin, rub your palms, make it warm, slightly dab them on your face. Hari Om sabhi ko. Have a great evening. Thank you for joining. Love you all. See you tomorrow. Bye.